Good morning, Good morning, ma'am. students. Good morning, Good ma'am. morning. Yeah, good morning. So today we will be going to start our class, and I will be showing you some pictures, and you have to guess what things they are. Yeah. Okay, what we call them. So is it visible? Yes, ma'am. Ma'am, it is. Yes, They are ma'am. vegetables. Yeah, good. And this one, and here, Ma'am. The shop, Grocery yeah, shop. ma'am. yeah, Grocery shop. grocery shop. So how we can buy these goods? Buy these goods like we go to And shop, with we the help buy of with the help. Yeah, Anshul. ma'am, with the help of money. Yeah, good. So how goods were traded during the colonial era when there without no use of money? Uh, how Ma'am, goods were By traded? exchanging goods. Yeah, ma'am, by good. exchanging goods. Yeah. So what we call that system? Ma'am, barter system. Yeah, good, Shruti. So today we will learn about barter system. So students, suppose you have potatoes and you want bread, and other person is having bread and he want potatoes. So in this situation, what you will do? Reply, students. Ma'am will exchange goods from each other. So basically, this is the old method of trading in the colonial era. So it was introduced by Mesopotamia tribes, and at that times goods were exchanged like spices, food grains were exchanged, vegetables were exchanged with. They used to exchange with each other. So wait. So here is the definition of barter system. It is a system of exchange of goods and services directly with goods and services. Under this system, agriculture, produce, cattle, etc. was used as a medium of exchange. So at that time, they used to exchange goods directly with each other without no use of money. So can you name some goods which they used to do trading at that time with each other? Name some goods. Ma'am, grains. Yeah, good, Anshul. Anything? Any more thing? They used to Ma'am, exchange. animals also. They used Yeah. animals in order, matlab, in exchange of something other goods. Yes. So now I will be sharing. There is a role play activity. So I want 4 students to participate in this activity. Um, so there is a role of Raghav, Suman, Raj, Raman, right? So who will be participating in this role play activity? Student Ma'am, participate. can I? Yeah. So I want 4 students to participate in this activity. So introduce yourself who are playing the roles of this, and please switch on your camera. Ma'am, I will play Raghav. Okay. And And ma'am, who is I will playing? play the role of student to Suman. Okay. And I want 2 more students to join in this activity. Ma'am, I can participate, but I don't know the story. No, Because I am have a shared the dialogues in the chat box. So any 4 students can participate in this activity. So who is going to play the role of Raj? Ma'am, Sweetie. I will. Okay. And I want 1 more student to participate. I will, ma'am. Okay, Pritimani. Okay, so please start. Okay, ma'am. Yeah.
I am Raghav. I have potatoes and want bread. I am Suman. I have bread, but I don't want to exchange because I need clothes. I am Raj. Raj, but I have clothes and I want vegetables. Okay. I am Raman. I have huge quantity of grains and I want vegetables, clothes, but it is difficult to carry the commodities to exchange for vegetables and clothes. Okay. So here what we can observe from this That activity. Yeah, say. That Yes, everybody needs different thing. yeah. So there is some difficulty in barter system. So here we are going to discuss about the difficulties of barter system. Is my screen visible? Yes, ma'am. Okay. So is my screen visible? Yes, ma'am. These are the difficulties in barter system. So number one is lack of double coincidence of wants. So in this activity we have observed that suppose a person has cloth and need cow for milk. So he need to find a person who has cow to sell and need cloth. So in this they both are agreed, both the parties are agreed and willing to exchange. तो ये हो गया double coincidence of wants. But जब हमने इस group discussion के point of view से देखा तो राघव को चाहिए था bread and he have potatoes, but at the same time Suman have bread but he don't want to exchange with Raghav because she's need is clothes. So here there's a problem of lack of double coincidence of wants, right students? So transaction which will takes place only when the two people require each other's goods, तब वो double coincidence wants होगा. और जब दो parties willing नहीं होंगे एक दूसरे से exchange करने के लिए, वहां पे ये lack कर जाती है. This is the first difficulty of barter system. Second आता है lack of common measure value. So यहाँ पे बार्टर सिस्टम पे ये भी होता है कि मेजरमेंट जो होती है क्वांटिटी वो भी जब एक्सचेंज करते हैं तो प्रॉपर नहीं हो पाती है, डिफिकल्टी होती है एक्सचेंज ऑफ गुड्स में. फॉर एग्जांपल आज की करंट सिचुएशन में इफ ये होता तो लाइक एक पर्सन सेल करना चाहता अपना बाइक एंड which value is half of cow. So इस चीज में थोड़ी डिफिकल्टी आती. एंड देन इज डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कमोडिटीज. जैसे कि हमने स्टोरी में देखा कि रमन के पास क्वांटिटी थी ग्रेन्स की एंड उसको वेजिटेबल्स की नीड थी, क्लोथ्स की नीड थी, बट उसको डिफिकल्टी क्या आ रही थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, टू कैरी द कमोडिटीज एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड क्लोथ्स. सो बेसिकली in colonial era their assets were equal to in colonial era their assets were equal to capital wealth, and due to lack of durability we cannot store for long time like food grains, vegetables, फिर fishes हो जाते थे जिनको हम store करके नहीं रख सकते थे. So वो directly exchange करना होता था उस time पे. So that was the difficulty in barter system. So this is the lack of double coincidence of wants, where a person want to exchange but the other person don't want to exchange. So this was the difficulty in barter system. Second one was lack of common measured value, because सबकी value अलग है और उस time पे exchange हो जाती थी, but in current situation it was a difficulty. Then this one, capital wealth cannot be stored as good, lack of durability. उस टाइम पे एसेट्स जो होती थी उनकी फूड ग्रेन्स हो गए, जो वो फार्मिंग करते थे वही उनकी एसेट्स होती थी ऑन दैट कॉलोनियल एरा. सो इसलिए ये सबको स्टोर करके रखना दैट वाज अ डिफिकल्टी. देन डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कमोडिटीज.
क्योंकि so now recapitulation. The exchange of goods for goods is the exchange. Students, can you hear me? Yes, ma'am. Yeah. So now there is a question. So now there is a question. Suppose Rahul wants bread, and Rahul have potatoes, and he want bread, and Suman have bread, but he want clothes. So which type of difficulty they are facing? Which type of difficulty they are facing? मैम उन दोनों के मतलब उनको जो सामान चाहिए वो दूसरे के पास नहीं है. हाँ, करेक्ट. दूसरों के पास जैसे कि राहुल के पास पोटैटोज है एंड उसे चाहिए ब्रेड, एंड सुमन के पास ब्रेड है लेकिन उसे चाहिए क्लोथ्स. तो यहाँ पे वो विलिंग नहीं है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने के लिए द गुड्स. तो इसीलिए यहाँ पे लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो रहा है. So now there is some MCQ questions. The exchange of goods for goods is barter system. yeah, good. Then barter system is based on Double coincidence of wants. a double coincidence of wants. Yeah, good. क्योंकि जब दोनों पार्टीज की इंडिविजुअल रेडी नहीं होंगे इंडिविजुअली एक्सचेंज करने के लिए, तो वहां पे बार्टर सिस्टम फिर नहीं हो पाएगी, इसलिए. सो who introduced barter system? Students, who introduced barter system? मैम एक ट्राइब थी ना. Mesopotamia tribes introduced ma'am. barter system. You can note down in this in your notebook. Okay, ma'am. And second is, what do you understand by double coincidence of wants? मैम जो सामान हमें चाहिए वो दूसरे के पास मिल जाए हमें. हाँ, और वो भी रेडी हो एक्सचेंज करने के लिए हमसे वो आइटम. It means two individuals are in possession of such goods which they are willing to exchange for the satisfaction of their wants. So, the last question. Amisha buys an ice cream from a grocery shop for 20, and at the same time sells the packaging material to the grocery shop for 200. The sale and purchase by Amisha refer to barter system of exchange. True or false? True. How true? Because they are dealing with money. Ma'am, false. Yeah, correct. False. Because sale and purchase by Amisha does not refer to barter system of exchange, because both sale and purchase are done using money as a common medium of exchange. So now this is your homework. Note down this in your notebook that two questions are there. First was barter trade effective, or second one is why would a bartering economy not work? Write your views, and the class we will discuss. Student, and
Next class, today we have learned about barter system and difficulties of barter system. And next class we will discuss about money. Thank you. Yes, Pooja, what is your reflection about your presentation? Yes, ma'am. Yeah. थोड़ी मैम थोड़ा छोटा था lesson plan. How many teaching points have you covered today? 2 teaching points. Okay. Suppose if you are in the classroom and you have prepared this lesson plan, but you are lacking with the time, still you are in the class of 30 minutes, then how would you be able to manage it? Because you cannot skip the class right now, fine? Then Yes, how ma'am. you will be manage this time gap? Ma'am, I would have asked some examples like which I've discussed difficulties. I would have asked some examples related to that, and I would have explained it more in detail. देखो पूजा, हम जब क्लास में जाते हैं और लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं, हमें एक आइडिया हो जाता है, क्योंकि आपने रियल क्लासरूम टीचिंग किया है, तो एक आइडिया हो जाता है कि हमारा लेसन प्लान कब तक खत्म होगा, जो भी टॉपिक्स है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो लिटिल बिट जरा सा पेस को अपना स्लो करो और साथ में स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा करो। जो मैंने वैसे भी एक फीडबैक है आपके लिए कि ये कुछ जगहों पे इट वाज वेरी फास्ट इन द सेंस कि जैसे आपने सेकंड टीचिंग पॉइंट लिया था डिफिकल्टीज, व्हाट आर द डिफिकल्टीज, तो डिफिकल्टीज में जो जो डिफिकल्टीज आ रही हैं वो खत्म हो गया। उसके बाद स्टूडेंट से क्वेश्चंस आपने नहीं पूछे, और बीच में एक एक डिफिकल्टी के बाद क्या आप स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते थे कि कोई एक इमेजिनरी सिचुएशन देकर, है ना, Yes, या ma'am. उनसे कोई एग्जाम्पल पूछते। तो इस तरह का जब आप रियल क्लासरूम में इंटरेक्शन करोगे तो आपका ये लेसन प्लान बैलेंस जाएगा। पर अभी जो आपको मॉडिफिकेशन की जरूरत है वो ये है कि लिटिल बिट स्लो योर पेस, और साथ Yes, में ma'am. जो स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इन जगहों पे और करिए। हालांकि आपने एक एक्टिविटी यूज किया था रोल प्ले वाला, Yes, ma'am. दिस वाज गुड। एक दिखा क्विज भी आपने एक ऑनलाइन यूज किया, तो कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आपने डिफरेंटली आपने यूज किए हैं, बट स्टिल देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मोर इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, it is required. Yes, ma'am. बेटा एक चीज और ध्यान में रखने की है, आपकी किसी भी स्टूडेंट की वीडियो ऑन नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट। थ्रू आउट द क्लास सारी वीडियो ऑफ थी आपकी। यू शुड गिव द इंस्ट्रक्शन इन स्टार्टिंग, स्विच ऑन योर वीडियोस। Okay, ma'am. बहुत जरूरी है वो, ठीक है? All students switch on your video. मेरे ख्याल से अब तक वैसे ही ऑन हो जाना चाहिए था, मेरे इंस्ट्रक्शन की भी जरूरत नहीं थी। Am I right? रश्मि, प्रगति, निक्की, पूनम, बेटा आपकी वीडियोस को क्या हुआ? निक्की, पूनम, when a teacher is teaching you should switch on your videos. Okay ma'am, continue. Yeah, thank you ma'am. Acha, Pooja, one more thing. Whenever you are writing something on the board and you are expecting from the students, they should note down in their copies. This type of command or instruction should be given by the teacher. Just for example, कि जहाँ पर आपने definition दिया था starting में barter system की, तो it was nicely written on the board. It is good. पर साथ में वहां पे आपको कमांड देना चाहिए था कि स्टूडेंट्स को कि ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। जब वो नोट डाउन करेंगे तो साथ में आप एक पॉज लोगे, वो टाइम आएगा,
ठीक है। Yes, तो ma'am. ये आप, मुझे ऐसा लगा कि लेसन प्लान आपका बैलेंस्ड है, लेकिन जो लिटिल बिट टेक्निक्स होती हैं वो Yes, चूंकि ma'am. मिस हुई हैं, तो लगा कि पूरा लेसन प्लान शॉर्टर हो गया है। तो जब आप स्टूडेंट्स को कमांड दोगे और वो कॉपी में लिखेंगे, ऑब्वियसली दे विल टेक लिटिल टाइम, Yes, ठीक है। ma'am. तो ये कमांड एक है। और दूसरी चीज और है, एक और इम्पोर्टेंट स्किल, कि जब कभी भी किसी स्टूडेंट का आंसर करेक्ट नहीं आया है, Yes, ma'am. आई थिंक बीच में हुआ था जहाँ पे आपने एक्सप्लेन Yes, किया, ma'am. है ना। तो देखो, आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हो, पर स्टूडेंट का आंसर गलत आया है, तो अब आपको उसे प्रॉम्प्ट करना है, मतलब कुछ ऐसे क्लूज देने हैं अलग अलग क्वेश्चन की वो सही आंसर पे पहुंच जाए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा, यू मे आस्क द आंसर फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स, देन कम बैक टू द फर्स्ट स्टूडेंट, फाइन। Yes, तो ma'am. ये जब हम प्रॉपर फीडबैक की बात करते हैं, करेक्ट आंसर स्टूडेंट से लेने की बात करते हैं, तो इन टेक्निक्स को हम अडॉप्ट करते हैं, और ये अडॉप्ट करते समय हमारा टाइम यूटिलाइज होता है, ठीक है। तो Yes, इन ma'am. चीजों पे आप जरा सा फोकस करो, अदरवाइज इट इज गुड। Thank you, ma'am. ओके, पीयर ग्रुप, एनी फीडबैक फ्रॉम योर साइड, अगर आपको कुछ कहना है। मैम बस थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट, अगर पूजा आप थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो और अच्छा होगा, और थोड़ी सी स्माइल फेस पे। स्माइल, हाँ स्माइल, ये पॉइंट कई बार पूजा को ये हमने मेरे ख्याल से लास्ट सिमुलेशन में कई बार ये फीडबैक दिया गया था कि पूजा आपको कंटेंट नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन बस जरा सा स्माइल, क्योंकि वो स्माइल ही आपको अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करेगी, राइट। टेंशन लग रही है फेस पर, वो टेंशन नहीं हाँ, होनी चाहिए। व्हेन यू आर वेल नहीं प्रिपेयर्ड होनी एंड व्हाई चाहिए। यू आर इन टेंशन। Yes, ma'am. एक बेटा एक चीज और ध्यान रखो, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था, उसके अंदर आंसर एक बच्चे ने गलत दिया, दूसरे बच्चे ने आंसर सही दे दिया, एट दैट प्लेस यू शुड यूज आउट रेमेडियल टीचिंग। The previous one who has given the wrong answer, you should make him instruct कि repeat the answer, now you understand the answer, or you need some more clarification. Getting this thing, उससे क्या होगा Yes, कि ma'am. जिस बच्चे को नहीं आया वो ये सोचेगा कि आंसर क्या होना चाहिए, और जब आप एक बार उसको रिवाइज कराओगे उस आंसर को, तो डेफिनेटली उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो एंटर हो जाएगा, ठीक है मैम. ठीक है। और एक जहां ठीक भी है. इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जहां केवल आंसर आ गया, तो देयर Yes, यू no. शुड यूज आउट प्रॉबिंग, व्हाई, ओके, ठीक है एक्सप्लेन मैम. व्हाई यू आर सेलेक्टिंग दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, गिव योर रीजन। उससे Yes, क्या ma'am. होगा, आपको ये पता चलेगा कि उसने आंसर कहीं सुनकर दिया है और लर्नर को उस पर्टिकुलर टॉपिक का थॉरो नॉलेज है या नहीं, Okay. राइट। तो वो चीज Yes, थोड़ा सा है। ma'am. इसी से रिलेटेड ना, मैम ने अभी जैसा बताया, आपका लास्ट में क्विज में क्वेश्चन था ट्रू फॉल्स वाला। जबकि yes. हमने हमेशा बताया है सभी टीचर्स ने कि यस नो वाले या जो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं, जनरली आप उसको अवॉइड डालना ही करिए। नहीं है। क्यों करिए? क्योंकि डालना ही नहीं है। 50% बोलेंगे यस, 50% बोलेंगे नो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या रिस्पॉन्स है। पर अगर Yes. कहीं जरूरी है तो जैसा मैम ने अभी बताया है कि एक्सप्लेन व्हाई डू यू थिंक सो, द आंसर इज यस, द आंसर इज ट्रू, इसी तो वो आपको इसी ऐड क्वेश्चन करना के है। कॉन्सेप्ट में मैंने बोला था, क्योंकि उससे क्या होगा ना, नहीं, चलो हाँ। आपने एक डाल भी दिया, कोई बात नहीं, डाल दिया, बट अपने डाले हुए को हाउ यू रेक्टिफाई। अब आप उसको Yes, ma'am. कैसे बोलोगे कि यदि मैंने ये क्वेश्चन भी डाला तो चलो उसके पीछे मैंने फिर एक्सप्लेनेशन दिया, तो मेरा यस एंड नो टाइप क्वेश्चन जो है वो रिमूव आउट हो, Yes, ma'am. ठीक है। ठीक है मैम. जैसा पूजा भी की स्माइल तो दीजिए, ब्यूटीफुल स्माइल। अब Thank इसी you. को कीप, Thank you, ma'am. इसी को पूरी क्लास में मेंटेन रखना है, ठीक है।